Assalamu alaikum everyone. This is me Sundar Sinwar, your host for the day, and today we have a very special webinar for you. We have to talk about education and how education has been. You've always seen me in that platform, and now I'm so happy that I am putting the education faculty forward. We're going to talk about our education program that has been recently introduced by Greenwich University. It was previously as well in works with Greenwich University. Now we're just over here to talk about what the admissions are because they're started enrolling, how it's going to be, what the education program is all about. So first, I would like to welcome Sir Naveed. Assalamu alaikum, sir. How are you? Walaikum Sir Assalam. Naveed Mughal. Thank you so much for Thank you. having. Okay. So Sir Naveed Mughal is actually the student provost over here, and he talks about all the problems regarding any student queries or any student, related queries are discussed with Sir Naveed. Sir Naveed, introducing the education program. Why? To be honest, that why does encompass a lot. So first, if you Uh-huh. want, you can look at the landscape of education sector in Pakistan. तो अगर हम Hmm. उस पर नजर डालें, you have to see, and the two things that come out most evidently is that it's a very fast changing and a very fast evolving sector in Pakistan. Hmm. We have researchers, academic researchers going on with public universities, private universities, even universities have been working with universities abroad. It's a private Hmm. partnership, public partnership where they've formed, and इसकी वजह से काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं. And to Hmm. be honest, is the need of the hour. And looking at that, that's why we thought about this, and we had a think tank sitting together. We talked about it, and we came out with this idea that this is obviously the need of the hour. तो एक थ्री प्रॉन्ग अप्रोच थी इसकी वजह इसकी तरफ. एक तो सबसे पहले आपका ये है कि जी इन पाकिस्तान और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, लेट्स से, यू हैव एवर चेंजिंग टीचिंग पेडागोजीज. आपकी टीचिंग पेडागोजीज जो अभी पहले 15-20 साल में बदलती थी, अब वो उस लेवल पे बदल रही हैं कि एवरी कपल ऑफ ईयर्स यू गेट न्यू काइंड ऑफ टीचिंग पेडागोजीज कमिंग इनटू प्ले, एंड दे बीन जनरलाइज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो एक तो वो Hmm. चीज़ कि हम उसमें करें. दूसरी चीज़ कि ऑब्वियसली दिस इज because of this education sector, this is the primarily thing that we use to make our human resource. तो अगर हमारी ह्यूमन रिसोर्स है, तो जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स इस ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन कर रही है, so this program is directed towards them कि जी we can update their skill set and make them much more focused and much more efficient in imparting their education what they've learned. So this is Absolutely. the thing that we looked upon, and that's why we thought that this it was the need of the hour, and we had to come up with this program. Because I would totally agree to your point that education is something that is very important, and if we do not focus on how development and research is going in education, I don't think any educationist would ever go forward. Because I 100% agree it's the need of the hour. I present to you guys Dr. Khurram Alvi. He has done his PhD in education as well, and he's one of my teachers as well. So it's such an honor to share the screen with you as well, sir. How are you and how's everything? हाँ, I am fine and अल्लाह का शुक्र सही है. और for last 4 years I am serving as an assistant professor. Now I am an associate professor in Greenwich University and Hmm. head of department of humanities. In this last semester, I plan to develop B.Ed to 1.5 and 2.5 program. Before we are also हम कर रहे थे प्रोग्राम 4 years का, but Hmm. in B.Ed 1.5 year program is one of the most important program because के हमारी बहुत सी टीचर्स जो कि स्कूल में पढ़ा रही होती हैं बट दे आर नॉट ट्रेन टीचर, दे आर. तो Hmm. दैट प्रोग्राम बेसिकली तौर पर उनको हमने टारगेट किया है कि वो टीचर्स जो कि स्कूल में पढ़ा रही हैं बट दे आर नॉट प्रोफेशनल टीचर, दे हैवंट अ प्रोफेशनल डिग्री ऑफ टीचिंग पेडागोजी के स्किल्स उनको नहीं आती है, उसके लिए हमने ये प्रोग्राम किया है. दैट प्रोग्राम इज ऑल्सो एक्रेडिटेड फ्रॉम HEC, नेक्टी प्रोग्राम है. And B.Ed 1.5 program, the eligibility criteria is 16 years of education other than education program. Means के if a student has तो सर 2 years. बेसिकली हम लोग आई एम सो सॉरी टू कट यू आउट सर बेसिकली हम लोग जो बीएड प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, इट्स गोइंग टू बी इन टू पोर्शंस. हम लोग का टू साइड्स दिख रहे हैं इसको हमें. एक है 2.5 इयर्स का और एक है 1.5 इयर्स का. एम आई करेक्ट? Yes. Uh, और in सर दोनों का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम 2.5 इयर्स वाले की बात करें?
In 2.5 years, the eligibility criteria is that 14 years of education. Means those candidates who have passed their BA, BCom or BSc examination, he has a 14 years of education. Then वो जो है eligible होंगे B.Ed 2.5 में. They complete 90 credit over in 5 semester program. 5 semester में 2.5 में करेंगे, and then after that they get 16 years of professional degree. B.Ed program. After that, also they eligible to take admission in MS or MPhil program in education. ओके, और सर जो 1.5 उसका था सर, उस पर भी थोड़ा वापस से आप एक्सप्लेन करें कि जो हमारा जैसे मास्टर्स के बच्चे होते हैं उनके लिए होता है। इन B.Ed 1.5 बेसिक तौर पर दो स्टूडेंट्स के लिए दे हैव ऑलरेडी मास्टर्स हैं वो, और वो एजुकेशन से में फील्ड में आ गए हैं, तो उनके लिए ये प्रोग्राम है फॉर प्रोफेशनल इन सर्विस ट्रेनिंग के लिए, बिकॉज कि आफ्टर बिफोर इसके B.Ed 1.5 B.Ed के बगैर प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बगैर भी आप एज ए टीचर्स प्रोफेशनल टीचर्स आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो स्कूल को, स्पेशली बिल्कुल। इन अब्रॉड। अगर आप किसी जाके वहाँ पर इफ यू वांट टू स्टार्ट एज ए करियर एज ए टीचर, तो आपको 16 ईयर्स के साथ प्रोफेशनल डिग्री में आपको B.Ed की भी होनी चाहिए। तो उन कैंडिडेट के लिए इन आवर कंट्री ऑल्सो, if you join a government sector institute organization or in a school, तो आपको B.Ed 1.5 B.Ed की डिग्री आपके पास होनी, प्रोफेशनल डिग्री होगी, then you can apply eligible for apply in school, government school or this. और सर सही बोल रहे हैं सर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एजुकेशनिस्ट हैं, ठीक है, और हम लोग डेफिनेटली हमारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो हाउ मच डू यू अग्री दैट ये जो हमारा बीएड प्रोग्राम है, क्योंकि सर एजुकेशन ऐसी फील्ड है जो सबसे ज्यादा सफर करती है, जो मैंने देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने भी देखा होगा कि पाकिस्तान में एजुकेशन फील्ड क्यों सफर करती है, बिकॉज यहाँ पर प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स को इतना जोर से या इतने गहरे सोच से नहीं दिया जाता। तो इस बारे में कुछ बताएं कि व्हाट एग्जैक्टली व्हाई बीएड प्रोग्राम एंड हाउ मच इज इट इम्पोर्टेंट। B.Ed program is one of the most important program, especially for teachers and students. अगर वो कोई स्कूल में हमारे यहाँ ये है कि टीचर्स जो है वो कोई भी सबसे लास्ट की प्रायोरिटी पे होते हैं, वो फॉरन ज्वाइन कर लेते हैं स्कूल के, बट दे डोंट नो कि हाउ टू टीच स्टूडेंट को किस तरह से उसको साइकोलॉजिकली उसे देखना है, उसकी मोटिवेशन किस तरह से, हाउ टू डेवलप लेसन प्लान, किस तरह से लेसन प्लान डेवलप करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, फिलोसफिकल अप्रोच किस तरह की करिकुलम की डेवलप करनी है, सिलेबस की। तो ये सारी चीज़ें हम जो है टीचर को नहीं पता होती, वो सिर्फ जाके कंटेंट बेस्ड नॉलेज प्रोवाइड कर रही होती है। सिर्फ स्टूडेंट को एक नॉन ट्रेन टीचर जो है सिर्फ वो कंटेंट के बारे में तो इन्फॉर्मेशन दे देती है, लेकिन उसको एक एज पर डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन इज नॉट अ नेम ऑफ टू चेंज अ क्लास और सिर्फ ओनली द इन्फॉर्मेशन। एजुकेशन जो है पूरी की पूरी चीज़ का नाम है, जिसमें जो है बच्चा जो है बिल्कुल चेंज होता है, उसकी जो है साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है, उसको जो है उसकी जो मोटिवेशन ट्रेनिंग भी दी जा रही होती है, उससे जो है टीचर को जो है हाउ टू डेवलप क्लासरूम को मैनेज किस तरह से किया जाना है, किस तरह से पेडोलॉजिकल स्किल्स को यूज़ करते हुए बच्चों ने पढ़ाना है। कि इफ टीचर टीच इन अ क्लास इन मैथमेटिक्स, और बच्चों ने जो है मैथमेटिक्स को किस पेडोलॉजिकल स्किल्स से पढ़ाना है, तो वो अगर टीचर को नहीं पता होगा तो हाउ टू टीच टीचर इन अ राइट वे, तो इस तरह से लर्निंग बच्चों की उस वे में नहीं हो पाएगी जिस तरह से होनी थी। तो बेसिकली तौर बिल्कुल। पर इस एग्जाम की इम्पोर्टेंस ये होती है B.Ed में कि B.Ed प्रोग्राम भी डेवलप दीज थिंग्स। स्टूडेंट्स को हम जो है B.Ed प्रोग्राम में ये एजुकेशनल साइकोलॉजी हम पढ़ा रहे होते हैं, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन हम पढ़ा रहे होते हैं, मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन पढ़ा रहे होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर रहे होते हैं। तो ये सारी कोर कोर्सेज हम ये डेवलप कर रहे होते हैं, एज वेल एज फिर उसके जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट की जो नॉलेज है वो कंटेंट के हवाले से, और फिर उसकी पेडागोजी के हर सब्जेक्ट की पेडागोजी या टीचिंग मेथडोलॉजी डिफरेंट होती है, तो वो उसको उसके हिसाब से स्पेशलाइजेशन करा रहे होते हैं। यही वजह है कि फर्स्ट वर्ल्ड में, सेकेंड वर्ल्ड में और अनदर अब्रॉड में जब तक आपकी प्रोफेशनल टीचर नहीं होगे, आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं होगी, इफ़ यू डोंट हैव अ डिग्री ऑफ प्रोफेशनल डिग्री ऑफ टीचर एजुकेटर्स की, तो यू कांट टीच, आप कहीं किसी भी लेवल पर पढ़ा नहीं सकते हो। तो ये डिग्री हमारे बिल्कुल। उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है कि दोज स्टूडेंट हु वांट टू आफ्टर सम एक्सपीरियंस और वो बाहर अप्लाई करना चाहते हैं एज ए टीचर करियर के हवाले से, तो वो देन एलिजिबल होंगे जब उनके पास ये B.Ed की डिग्री होगी।
बिल्कुल। I'm going to move forward with, thank you so much, Sir Khurram. I really appreciate आपने हमें बहुत अच्छी तरह, explain कर दिया about the eligibility, the criteria, the importance of education. Still, अगर if anybody has any confusions, any queries, you can just, write in the comments. I'll try to, solve it here and then. अभी हमारे पास, we have two people with us, very special. They're both alumni, and they both have done. One has done their MPhil, and the other is doing her PhD. I would welcome Miss Sarah Seher. Miss Sarah Seher is from St. Michael's Convent School. She's working over there as an in charge of the primary section. She has done her PhD at Greenwich University and MBA in educational management. Her PhD thesis, I really liked this, ma'am. वैसे by the way, आपका PhD thesis जो है वो है about bilingual, if I say it right, education. Miss. Yeah, benefits Yes, of yes. bilingual education. For So, the Miss, primary students. for the primary students, Miss, it's an excellent, first of all, thesis because it's so interesting, especially मैं एक linguistic students हो गए तो definitely, I'm all into it. So, Miss, how much do you think that this is important? You see, in the socio-economic situations that where we are living, students in our Mm. surrounding, they are coming from different backgrounds, and everybody does not have the exposure of being very vocal in languages. So basically, if we teach them in bilingual manner, the content that we aim to teach is delivered in a manner that they understand it better way. So that's the main reason I had to pick up, because I am associated with the field of education since last for 24 years, and I've seen Mm. this, that once they are given some support of their mother tongue, or Urdu maybe, then the content becomes easier for them. So that's the main reason I picked up this thing for my thesis. The topic, the particular topic that I chose for my thesis is because of this reason. Then that the students who are be teaching and who are coming to our school scenarios are not all very fluent with the background of their families, those who have the great exposure of being conversant in English. That's the main reason. That's so true, Miss. I totally agree to that. And that's a very good approach as well, because something that builds the motivation of a teacher is so much better than actually that, makes teachers completely go away. I would Yes, welcome my second guest with me. That is Miss Afshin Fatma Aga. She's an Australian qualified researcher, a gold medalist, a Montessori leader, and a maths curriculum developer with more than 20 years of experience in hands-on teaching and learning of mathematics. Her MPhil thesis from Greenwich University is experimented the effectiveness of hands-on tools in Pakistani classrooms. मिस बहुत मजे का टॉपिक है फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके थीसिस का बहुत ही मजा आएगा अगर आपका थीसिस में पढूं तो मिस थोड़ा बताएं अपने थीसिस के बारे में व्हाई हैंड्स ऑन टूल्स इन पाकिस्तानी क्लासरूम्स See, Assalamu alaikum. Actually, when I joined Greenwich University, during that time, like in 2017, I was working on maths curriculum a lot. So I realized that there is a lack of understanding about hands-on math and how to make use of it. Because our teachers were not aware that there are hands-on tools available. If not, they can prepare hands-on tools and then they can work in the classroom in an active way. So I started designing the tools and training the teachers that how they can use. But I wanted to experiment that also. So as you know that a startup requires a lot of time, energy and commitment, and so is the same with the research degree. So I had two challenges in my hand. So, and I was a bit confused whether I should join the Greenwich University or not. So I had some priorities for selecting an institute for a research degree. So Alhamdulillah, I started my venture, what I wanted to experiment and documented it through thesis. I was able to do that. Okay, that's amazing. I would take Miss Afshin and Miss Sarah on board and ask them, Miss, how is your, the whole thesis pedagogy? How did it went and how was it? Uh, you see, once I was already working in this education sector, and if you're a teacher, teaching is not the job of the half day. You have to make plans, you are into the curriculum, you are into checking, you are into classroom teaching. So I mean, it's a 24
hours job basically. So along with that, if you want to get yourself certified and get yourself further qualified, you need to have a place where you have the liberty, where you have some, like flexibility, and where you have some convenience. That is all which I found in Greenwich University. The convenience, the flexibility, and the time, which is required by the student who is always, occupied in, already preoccupied in so many other things. So there's no, I can't express in my words that what I have gone through, because selecting Greenwich as an option for me, because there were other universities also, but why I chose Greenwich, because I found that they are flexible in their time frame. I could, choose the timings of my classroom. Sir Puram has been an excellent mentor. He's been an excellent teacher for me throughout my study. He guided me so well. I can't explain in words. So that's the main reason I prefer, and I would, recommend Greenwich University to upcoming students also, so that they should come and apply and join B.Ed program. Inshallah, Miss. Miss Afshin, if I talk to you about it, what was your experience like? Yeah, like I just said that at that time I was so busy that I was involved in school, and I had my own venture, and I also wanted to experiment it scientifically. So I had some priorities for selecting an institute for my research degree. So Hmm. my priorities were that there must be strong support system, so that the timings would be flexible, and I like when there is flexibility, it's easier for you to make and all. An institute which is organized and has strong time management policies. An institute which has highly skilled faculty, so that I could learn and enhance my skills, helpful in my research, which was related to my venture. So, Alhamdulillah, after joining Greenwich, I found everything what I wanted to, and Alhamdulillah, I successfully completed my thesis on the math manipulative that I designed. I experimented those, and I documented it as my thesis, my MPhil thesis. Miss Afshin, I'm so going to come to you for some classes on mathematics because I feel like Yes. being in the linguistics department ना मेरा तो मैथ से इतना दूर का ताल्लुक हो गया कि मैं सर खुर्रम को भी ये बोल रही थी सर ये छोटे मोटे स्टार्ट्स भी ना मैं कैसे करूंगी मूविंग फॉरवर्ड to Sir Naveed. So Naveed, scholarships are a big reason why we are all studying. To be very honest, I was offered a scholarship from Greenwich University, and I'm so thankful to it because that's the only reason why how I continued my studies. To be honest, especially working. Yeah. So an investment in knowledge pays the best interest, they say, and that's how we take it forward. Your thesis was also a part of this. So how do you take scholarships? Because before I go on into detail about everything, I just want to take some time out and thank both of these panelists जो मेरे साथ रहते हैं, क्योंकि एक चीज़ हमारे हमें ग्रेनिच में हम हमेशा अंडरस्टैंड करते हैं, हम इस पर फोकस करते हैं, हम जितना इस चीज़ पे एम्फसाइज करते हैं, आई डोंट थिंक सो एनी अदर इंस्टीट्यूट दैट आई हैव सीन डज इट, क्योंकि ग्रेनिच पे आई हैव ऑलवेज सीन we have this understanding that teachers are the single greatest factor that one has on the impact of students. कि स्टूडेंट अपने आप को ग्रो किस तरह करता है, अपने आप को किस तरह प्लेस आउट करता है इस दुनिया में, उस चीज़ में जितना टीचर प्ले करता है किरदार उतना कोई और नहीं करता. So I think I want to thank you for the kind words that you've shared with us, and the reason behind us being so accommodating for you guys is because of this reason only, क्योंकि आप लोग उन फैक्टर्स में से हैं जो इंसान को बना सकते हैं. So just coming, and now I'll just quickly come to your other part of the scholarships. So scholarships, हाँ एक firstly हमारा tradition रहा है Greenwich पे. I do not know the exact amount, but every semester we give about I think 25% हमारा जो होता है, जो total revenue उसमें हमारा इतना होता है जो हमारी scholarships में जाता है. That coming from a private university is I do not think there is any other private university that is currently doing that. Why we do it? This is because it's एक तो जैसे मैंने अभी कहा कि हमारा ट्रेडिशन है, दूसरी कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. As an institution, I find it that we need to play our roles. Everyone has to play their roles in order to get the focus that we are trying to achieve. तो इस चीज़ के लिए ऊपर हुआ था.
तीसरी बात कि हम स्कॉलरशिप, मैं स्कॉलरशिप पे आता हूँ कि हम कितने कितने दे रहे हैं, बट जस्ट टू लाइक गिव यू अ बेटर फोकस, मैंने अपना मास्टर्स का थीसिस जो है वो इसी पे किया था. The topic of my thesis was how the socio-economic background of a student hinders his academic achievement. ये केस स्टडी हमने ग्रेनिश के ऊपर फोकस की थी, और मैंने इसको अपना स्टैंडर्ड जो था जिसके अगेंस्ट टेस्ट किया था वाज अगेंस्ट द Maslow's, द फेमस Maslow's नीड ऑफ हायरार्की, जिसके 5 लेवल्स होते हैं. So what we found out that even if the student had completed the 5 levels, for example, self-actualization, self-esteem, love and belonging, safety needs, और फिर आपकी physiological needs भी, even after all these needs have been completed, you and your socioeconomic background does not permit you to do well in other walks in life, तब आपका focus education पे उतना नहीं रहता, and your growth is always hindered. तो हमने ये सारी चीज जो भी फाइंडिंग्स हमें इससे मिली थी, थोड़ा बहुत इस पे हमने काम किया. So right now for our B.Ed program हम ऑफर कर रहे हैं 50% off on tuition fee for all teachers. Wow. So this is how we're going to play our role and make sure that कि जी कोई भी चीज हिंडर नहीं करे किसी भी टीचर की एजुकेशन की नीड्स. एक तो education should be accessible to everyone, and I think this is how we are trying to play a small role and actually walking the talk, as you may say. That's so true, sir. First of all, that's really cool that we're offering 50% scholarships, because that's a very big step to be taken, especially by Ganesh University. I appreciate that. Sir Khurram, the scholarships. मेरी उस दिन आपसे सर इतनी बार बात हुई है, और जब भी मैंने आपसे बोला, मैंने बोला सर कि सबसे मसला जो आता है ना एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो आता है कि क्योंकि रिसोर्सेज कम है और अपॉर्चुनिटीज कम है, तो लोग बहुत बार प्रोफेशनल डेवलपमेंट इसलिए भी रोक लेते हैं. How much do you agree to that, sir Khurram? आपको लगता है कि वाकई scholarships are going to help students and they're going to move forward? बिल्कुल स्कॉलरशिप पे जो है काफ़ी हेल्प करेगी, स्पेशली दो टीचर्स जो कि स्कूल में हैं और वो और दे बिकम अ प्रोफेशनल टीचर, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और वो इंटरेस्ट होंगे इसमें उनके लिए. और उनके लिए बहुत अच्छा मौका भी है कि वो इनरोल हों इसमें और आगे प्रोफेशनल टीचर बने, एज ए करियर इसको आगे बढ़ाएं कि आइदर के सम टाइम टीच और फिर उसके बाद अपने दूसरे करियर में मूव कर जाएं, बिकॉज टीचिंग इज़ ए नोबल प्रोफेशन. बिल्कुल बेशक सर, आई टोटली एग्री. इट्स एन ऑन लर्निंग प्रोसेस, और उसमें लर्निंग कभी खत्म नहीं होती, एंड यू लर्न एवरी डे फ्रॉम स्टूडेंट्स, फ्रॉम योर टीचर्स, फ्रॉम योर सीनियर्स. It's like everywhere. I saw one of the questions right now. Can someone okay, it's Asheen Zehra is asking us, can someone doing from virtual shift to Greenwich from second semester onwards? Sir, hybrid learning, मैं हम लोगों ने इस दिन बात की थी, मैंने और सर खुर्रम ने, hybrid learning, blended learning, this is the new. COVID has actually, opened a total different dimension for the education industry and the education sectors. So, what do you take it like? She's asking that कि अगर वो second, अपना semester join करना चाहें यहाँ पे as a, online learning. What do you guys say to that? इसके लिए उन्हें उनकी पेरेंट यूनिवर्सिटी से दे फर्स्ट टेक एनओसी and then as per rule he joined as per university policy we give 50% उनको transfer of credit मिल जाएगा, then they start in here. in इस सेमेस्टर में हमारी हाइब्रिड लर्निंग होगी, ब्लेंडेड लर्निंग है फॉल में, क्लासिकल एज वेल एज वर्चुअल लर्निंग होगी. उसका रेशो तय होगा एज पर कोविड के हवाले से कि आइदर के वो 50% है या 30-40% क्लास 30% ऑनलाइन क्लासरूम क्लास टीचिंग होगी और 70% वर्चुअल लर्निंग होगी. ये एज पर पॉलिसी एचईसी पॉलिसी होगा. और क्वेश्चन है कि दे वांट ट्रांसफ़र, तो ट्रांसफ़र की लिहाज से ये फर्स्ट पेरेंट्स यूनिवर्सिटी की एनओसी रिक्वायरमेंट है एंड देन टेक एडमिशन इन जॉइन इन अ सेकंड सेमेस्टर. ठीक है सर. Is it recognized, like can we get admissions for MPhil in AKU ID for masters with this degree? ये पूछना चाह रही हैं कि जो हमारी डिग्री होगी बीएड की, तो वो रिकग्नाइज्ड है और वो एचएससी रिकग्नाइज्ड है, ताकि that degree is recognized from HEC and also accredited from NECTE. NECTE is a national accreditation council for teacher educators है, जैसे in our business में NEBAC है, तो यहाँ पर NECTE है, तो that program is also accredited from NECTE and HEC recognized. B.Ed 1.5 and 1.5 both.
उसके specific So question, if I can just focus on a specific question, she said she do her MPhil from a specific institution. Yes, you can. You may. It's Okay. this program is fully accredited. हमारी सारी accreditations हैं ATC से NACTE से. So yes, you wouldn't have a problem in applying for your MPhil anywhere else. I totally agree to that because right now, even when I went outside and abroad, and I was telling one of my teachers over there that I'm doing my master's from Greenwich University, and the degree over there was actually accepted as well. So you don't have to worry about the degree that much. I remember क्योंकि मैंने भी बड़ी research करी थी. Because obviously जब हम लोग इतना invest करते हैं, sir, especially sir नवीद मैं आपको एक बात बोलूं क्योंकि जब हम लोग educationist Yeah, स्पेशली आते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ, ठीक है, ऑब्वियसली हर किसी को चाहता है, हर कोई चाहता है अपनी डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करे, आगे बढ़े. बट सबसे ज्यादा डर जो होता है ना वो इन छोटी छोटी नेटिग्रिटीज का होता है कि कहीं कोई रुक ना जाए या कहीं किसी को आपको बोले कि नहीं सॉरी आपकी डिग्री अवेलेबल ही नहीं है या आपकी डिग्री रिकग्नाइज ही नहीं है. और ये बहुत कॉमन फैक्टर है डर का और लोग काफी इस बात से डरते हैं. मिस बिल्कुल। सफशीन एंड मिस सारा, यू गाइज आर एक्चुअली वर्किंग एंड यू इसके गाइज हैव हवाले टेकन द डिग्रीज. गिरनीच जी के सर. मैं डिग्री के हवाले इससे yes. ये भी है कि हमारी पीएचडी और एमफिल की डिग्री जो है वो अटेस्ट है पीसीडी. अगर किसी ने चेक करना होगा आइदर के ये हम सही कह रहे हो नहीं, तो वो देन गो टू वेबसाइट एचईसी वेबसाइट पीसीडी पाकिस्तान कंट्री डायरेक्टरी एंड सी ओवर पीएचडी एलुमनाई नेम, हिज नेम इज इंक्लूडेड एंड डिग्री इज अटेस्टेड. तो हमारे सारे प्रोग्राम जो एचईसी से एक्रीडेटेड भी रिकग्नाइज भी हैं और उसकी एक्रीडेशन बॉडी से वो भी है. तो इसकी ये है कि आप एचईसी की वेबसाइट पर भी जाके इसको देख सकते हो. सिर्फ हम कह नहीं रहे बल्कि आप व्यू भी कर सकते हो. बिल्कुल बिल्कुल सर, जी. आई टोटली. सर नवीद आप कुछ बोल रहे थे. हाँ, मैं इधर एक चीज बस ऐड करना चाह रहा था कि देखें द रीजन ऑब्वियसली दिस, आपने जब कहा था कि जी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एकेडमिक अपनी, ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट. आप ना सिर्फ अपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, आप अपनी टाइम की पूरी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं. आपकी लाइफ की कितने एस्पेक्ट्स होते हैं जो बिल्कुल तबाह हो जाते, तबाह नहीं मतलब ख़त्म हो जाते हैं. यू डोंट हैव अ सोशल लाइफ एनी मोर, यू आर टुवर्ड्स एकेडमिक इज एवरीथिंग दैट यू हैव. तो इस तरफ इस चीज़ में आने के लिए ऑब्वियसली हर किसी का सवाल बनता है. अच्छा, इसमें जो फैक्टर प्ले करता है वो हमारे मुल्क का एक ट्रस्ट डेफिसिट है. ट्रस्ट डेफिसिट बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. कभी आप लोगों को चांस मिले इस पे ज़रा पढ़ के देखिएगा. एक होता है कि जी जब बंदा बहुत बार डसा जाता है तो वो फिर होता है कि जी नहीं हर चीज में सवाल. तो दिस इज वेरी दीज क्वेश्चंस डू कम अप एंड दे शुड एक्चुअली कम अप क्योंकि ऑब्वियसली यू नीड टू मेक द डिफरेंशिएशन अबाउट all these institutions which are doing it. तो हम ऑब्वियसली वी आर फुली एक्रेडिटेड, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर कुरम ने, कि आप ईजीसी की वेबसाइट पे जाके हमारी डिटेल्स पास ग्रेजुएट्स उनकी ले सकते हैं कि जी उनकी डिग्री की अटेस्टेशन हुई है एंड एवरीथिंग. सो आई गेस ये ट्रस्ट डेफिसिट को हटाने के लिए दैट वुड बी इनफ, वो चेक कर सकते हैं. I would totally agree to that. I love the way put it in the humorous form as well. Mr. Sheer and Miss Sara, आप लोगों ने देखें डिग्री ली, आप one of you has an MPhil, the other one is in PhD. Miss, how much is it supporting you in your education field now? I would start with Miss Afshin. Okay, so this I would say that like when you look at for longer, broader aims in life, then you should always go for professional degrees. Definitely. So these short courses are for smaller aims just to refine your skills. But when you look for the longer term aims, your ambitions, your passion, which you are interested in, so you take that passion and find out that degree in the same profession. So then you select a path to excel. So you get some specialities. So like with me, I was always interested in hands-on material. As I'm a Montessorian, I train the teachers for how to make their teaching interesting with younger kids. So I was into hands-on a lot. Then I did my B.Ed. So I opted for English and math in that. So I learned about math. So I combined both the knowledge, and then in masters I opted for I did my action research in hands-on English, like how English can be made interesting with active learning. As I moved on, when I started teaching, I found out the gap, because since I had the degree, so I was accepted everywhere. So everyone wanted that
I would go into their school to work. So I got a chance to work as a maths coordinator at the Learning Tree School. I worked there for 6 years, and in fact, I refined my skills. I developed myself a lot with the knowledge, with the degree that I had. Then I eventually started my own venture looking at the vacuum in this area of active learning in math, because math is something not everyone is interested in working with, and especially hands-on learning in different levels. Like when children are at younger age, they have different needs, there are different behaviors, there is a different mindset to teach. So when you do B.Ed course or M.Ed course, so you learn about child psychology. So these degree courses help you a lot in moving ahead and in dealing with all type of children, because you have learned about their psychology. So this is how this degree program helps you a lot in all the areas wherever you go, whatever. Because when you go in the market, when you go in the industry to work, so like I applied in the beginning, when I applied for teaching as secondary maths teacher, I got the opportunity of working as an elementary teacher. So I said, okay. Then I started working with younger kids. Then eventually, I uh, taught older kids. I taught till grade 11, match to grade 11. So this is how I developed. But if I did not have any degree in that, I wouldn't have gotten this chance. So this is how they go hand in hand, degree and That's your so. professional career. That's an amazing explanation, Ms. Afshin. I would totally agree to that, because being in the education field myself, I've seen so many people just coming in the education field without getting, proper ideas about how they're going to go. And when they start 2, 3 months, उसके बाद उनको होता है कि, oh my God, I cannot do it. It's so much pressure. It's totally different from my career path. Miss Sarah, how was your degree and how did it help you in it? You see, like uh, few years back, maybe one decade back, the B.Ed programs which were available in different universities, they had those proper timings that from the morning to afternoon, and they did not have those weekend programs and all. So those many teachers, those who were really wanting to do, like go for professional growth, they were limited to they had limited options. But then once these like B.Ed programs, and once the universities started with these weekend programs and all, everybody, most of the teachers opted for those programs. And with that also, I also went to do my MBA. And but then after doing my MBA also, there was something missing, because MBA is like a mixed plate. You see, you do everything, but you are master of none, basically, right? I did my MBA in educational management, but still I found that no, there is something missing. I still have to, learn more. I still have to have a grip over education, psychology, education, like pedagogy, teachers training, and everything. So for that matter, I was looking for, like multiple options where I can go, where I can improvise my education, where I can learn more about child psychology, and get into in-depth knowledge of what my field asked me to. So Greenwich, yes, it was the answer. I found all the answers here, and then this degree is, meant for me to, to value whatever I say. It carries a worth. Why? Because now we have the degree to get that value for the things which we are saying. The position that I work on, I have people working under me, so I need to have an understanding where I can tell them and support them wherever they are lacking. So I found this degree very helpful in that, and very supportive in terms of my professional growth, in terms of my inbuilt abilities, and in terms of my overall professional enhancement, which boosted gave me a little boost in my career also, and which gave me a broader horizon to work on. Bilkul, Miss. I totally agree. I'm getting some questions. So, Khurram, I will switch to you. Saman Shah from our university, she's asking, please tell me eligibility criteria and time duration of the EMIT program if one has done her master's in English literature.
because a master of English literature is a 16 years of education, then the eligible for B.Ed 1.5 program. M.Ed program One. is अब खत्म हो चुका है as per HEC. B.Ed program is also a 16 B.Ed 1.5 program is a 16 years program which is equal to M.Ed program. ओके, तो Student सर अगर eligible फॉर for एग्जांपल मेरा एमएड प्रोग्राम है, तो अगर मैंने आपका से सॉरी मैं आपको कट आउट कर रही हूँ, मेरा एमएड प्रोग्राम है तो उसके बाद फिर मेरा पीएचडी के लिए मैं MPhil. आई बी एलिजिबल? नहीं, after M.Ed program you are eligible for take admission in MPhil in education. एम After फिल इन एजुकेशन? in a old जो पहले वाला सिस्टम था उसमें first you after 14 years of your education or 16 year of education, first you done your B.Ed 1 year program, then 1 year program आपका M.Ed होता था 16 years, then you are eligible for take admission in education. अब ये हो बिल्कुल गया सही है। कि B.Ed 1.5 is a 16 years of education. M.Ed program खत्म हो चुका है. After that program you are eligible for take admission in MPhil program, MPhil in education. ठीक है सर, so it's basically summon to your answer, I would say that masters के बाद it's going to be a 1.5-year program. Please tell me the if B.Ed is offered in morning, so what is the timing duration and how are you going with the program? B.Ed 1.5 and 2.5 program is basically a weekend program है ये. Friday, Saturday and Sunday कुछ classes का हमने शेड्यूल किया बिकॉज मोस्ट ऑफ द इसमें इनरोल्ड जो होंगे हमने ये कहा है कि वो टीचर्स होंगे और पूरे वीक में वो मसरूफ होंगे, तो दैट प्रोग्राम इज बेसिकली तौर पर इफ दोज इनरोल हो रहे हैं जो कि 6 कोर्सेज में, तो टू कोर्सेज करके फ्राइडे सैटरडे एंड संडे 1 और है, एंड देन this program is weekend program basically, both program in ठीक है, morning so the to weekend program morning से nine सर I would say to 9 o'clock जो start होते थे 9 to हमारे 9 टाइम। बिल्कुल 9 to 9 होगा, and Friday, Saturday and Sunday weekend program. Friday, Saturday, Sunday. Okay, that also clears up those parts as well. Any more questions, you guys? We're all over here. We can all help you out because you can see the alumni, you can see our student provost as well. Koi or there's any type of a query that you guys want to talk about, our website is coming down, and our admissions query, all of it is coming down. You guys can also message us over here and talk about it. Book an appointment with our what should I say, admissions department. Have a word with them. Because they're all available. Because I remember I have had Mr. Naveed, मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं आई थी ना, मैं स्टूडेंट जब मैं बैठी इन सबके साथ, जब मुझे एडमिशन, ठीक है, मैं तो वैसी ना बहुत ही डीप जाती हूँ हर बात को। सर ये निटिग्रिटी सर खुर्रम भी मुझे बोल रहे थे, सुंदर सही है ऐसे करेंगे। तो मेरे अंदर है ये चीज ना, और होते हैं बहुत सारे, स्पेशली हम एजुकेशनिस्ट में ना ये चीज आ जाती है, हम बच्चों को पढ़ा पढ़ा के ना इतने आदी हो जाते हैं हर क्वेश्चन पूछने के लिए कि हम हर क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। तो सर मूविंग दिस फॉरवर्ड, आई हैव ऑलवेज सीन द एडमिशंस डिपार्टमेंट वेरी ओपनिंग, वेरी वेलकमिंग, दे ऑलवेज हेल्प अस आउट, और कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं तो बस सर ये मसला हो गया, अब आप मुझे बताएं क्या करना है। इस आप तरह से बिल्कुल बात बात करते कर थे हम रहे हैं। लोग। और इस बार हमारा एडमिशंस डिपार्टमेंट एक चीज़ हम लोगों ने और भी की है, क्योंकि अगर बिकॉज एज वी ऑल नो द ग्लोबल पैंडेमिक इज गोइंग ऑन, लाइफ एज वी नो इट हैज़ कम टू अ स्टैंड स्टिल। चल रही है, थोड़ी बहुत चल रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा किस तरह चल रही है, तो देखेंगे। एक तो इस चीज़ में ये है कि मैं आपको हाइब्रिड लर्निंग का थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि अब हमने हाइब्रिड लर्निंग जो सिस्टम लेके आए हैं उसमें ये होगा कि जी 20 स्टूडेंट्स अगर क्लास में हैं तो जो पहले 10 थे उनकी ऑनलाइन क्लास हो जाएगी, और जो दूसरे 10 थे दे विल कम टू द यूनिवर्सिटी एंड विल हैव अ फिजिकल प्रेजेंस, एंड दिस विल गो ऑन एंड दिस विल चेंज, सो इट विल बी ऑन अ रोटेशनल बेसिस इस चीज़ में। दूसरी नाइस, चीज़ दैट्स मैं जो वेरी कह रहा था कूल। कि कोविड-19 को देखते हुए लोगों ने अपनी चीज़ में ये, yeah. So because obviously everyone is not used to these teaching pedagogies, so we have to make sure we are kind of catering to everyone. Coming to the thing कि एडमिशंस डिपार्टमेंट की आपने बात की थी, तो मैं ये बता दूं कि हम अब और ज़्यादा लीनियंट हो गए हैं, ज़्यादा खुश हो गए हैं, वहाँ थोड़ा एक लाइवली एटमॉस्फेयर होना शुरू हो गया है, क्योंकि ऑब्वियसली कोविड की वजह से काफ़ी लोगों के पास दे कुडंट डू व्हाट दे हैड बीन प्लानिंग टू डू। तो अब हमारे जो एडमिशन क्राइटेरिया है उसमें हम ये है कि वी पहले हमारा टेस्ट होता था, ये होता था, नाउ वी हैव मेड इट इनटू अ सिस्टम वेयर इट जस्ट फोकसेस ऑन वन इंटरव्यू where a panel comes and decides, and फिर उसी हिसाब से आपका एडमिशन प्रोसेस हो रहा है। तो इतनी पहले वाली मुश्किलात नहीं है जो होती थी, अब इट्स क्वाइट अ सिंपल एंड सीमलेस।
हाँ, So, इस सेमेस्टर में स्पेशली एडमिशन जो है वो डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड एडमिशन है, टेस्ट नहीं है। और जी होल इस पे जो है है, तो ये एक ये है। और प्लस ये कि that's हमारे very इसमें helpful. इन स्पेशली इन एजुकेशन प्रोग्राम में 50% ट्यूशन फी है, और फिर इंस्टॉलमेंट भी है, 2 इंस्टॉलमेंट में भी आप पे कर सकते हो। Oh ये wow. स्पेशली That's very nice, sir. आप लोगों ने तो full अच्छा सा एक package बता दिया foreign से, to help everybody out. I really appreciate it. Thank you so much for your time. Sir Ramreed, Miss Afsheen, Miss Sara, Sir Khurram, आप तो सर मेरे साथ हमेशा ही रहेंगे. Sir Khurram के साथ तो मुझे लगता है मेरा PhD भी चलने ही वाला है. So thank you so much, you guys. I really appreciate your time. This was all our faculty, and because right now the reason why we took the B.Ed program and want to discuss about the education program was to help you guys see that कोई भी आप लोग का मसला है, कोई भी परेशानी है, and if you're not clear about which career path to choose, how to choose it, you can always see these type of webinars and get your education and get complete what should I say requirements ready for it. If there are any questions and if you guys have any queries, you can see that down the screen, there's a whole official WhatsApp queue coming. Then afterward, there's an email coming. You have our website as well. You can email us, you can call us, you can come on the department as well. All these, which other activities, so, right now they're asking about the other activities in the campus. What do you have to say about that, Sir Naveed? अदर एक्टिविटीज अबाउट कैंपस मेरे ख्याल से इसके आया है कि हम बात कर रहे हैं कोविड के उसमें, तो अगर कोविड के देखते हुए इसके ऊपर बात करेंगे तो जी फैसिलिटीज खुली होंगी, बट ऑब्वियसली विद ऑल सोशल डिस्टेंसिंग एसओपीज इन प्लेस। ऑब्वियसली हम चाह रहे हैं कि 6 फीट का डिस्टेंस हो आपके स्टूडेंट के बीच में, अगर आप कैंटीन में बैठे हैं। एक चीज़ अभी भी जो हम सोच रहे हैं इम्प्लीमेंट करने का कि ऑब्वियसली वी हैव दिस थिंग ऑफ टी स्टूडेंट्स कमिंग इन एंड देन स्टेइंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, हम उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फैसिलिटीज तो सारी होंगी, बट इट जस्ट विद द जनरल एसओपीज इन प्लेस। जी सर, बिल्कुल डेफिनेटली दिस इज समथिंग दैट्स वेरी मच रिक्वायर्ड और एसओपीज के बगैर तो आई डोंट थिंक सो. आई थिंक दिस इज आवर न्यू नाउ, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू बी विद एवरीथिंग जब तक वी वी हैव डोंट टू फाइंड द लर्न, वैक्सीन. we have to हम्म. adapt to it and कहते हैं ना कि जी for education you need a conducive environment, तो ये जो छोटी छोटी factors हैं, this is all part of that conducive environment. It's not just the classroom learning and you what in theory you're being taught, ये सब कुछ मिल के आपका एक चीज एक फैक्टर निकालता है जिस जो आपकी ग्रोथ को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। तो आई गेस हाँ इंशाल्लाह इसके ऊपर काम करेंगे, एसओपीज के साथ चलेंगे। सर प्रैक्टिकल टीचिंग बेनिफिट्स जो होते हैं स्पेशली बीए प्रोग्राम में, सर खुर्रम आप उसके बारे में बताएं. आर वी गोइंग टू गो विद दैट एज वेल? बिल्कुल। बीएड प्रोग्राम में टीचिंग प्रैक्टिस इज एसेंशियल है। 3 क्रेडिट ऑफ वर्क का टीचिंग प्रैक्टिस है, एंड रिसर्च वर्क ऑल्सो रिसर्च वर्क है। एंड टीचिंग वन टीचिंग प्रैक्टिस इन हाई स्कूल, उसमें टीचर्स ने लेसन प्लान डेवलप करना, हाउ टू डिलीवर लेक्चर और विच टाइप ऑफ पेडागोजी यूज इन अ क्लासरूम, लेसन टू लेसन, हाउ टू आस्क क्वेश्चन। तो टीचिंग प्रैक्टिस है, और ये हमारी जो बीएड की जो डिग्री है जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज होती है, और हर कंट्री में उसकी मेन फैक्टर है कि हम इस बीएड प्रोग्राम में टीचिंग प्रैक्टिस करते हैं, जो कि 3 क्रेडिट आवर का है, हमारा एक एलिमेंट है। Okay, sir, that's amazing. Sir, now I'm going to take everyone's advice that, advice for our prospective students when applying to Greenwich University, sir. Why Greenwich University? Starting off with Sir Naveed. Again, why Greenwich University? Greenwich provides you with an atmosphere which is conducive to learning, where I have not found any other institution doing that. It also gives you access to a network which is exponentially all across the world. आप सिर्फ इसमें ग्रेनिच में आके एक इंस्टीट्यूट के पार्ट नहीं बनते, यू बिकम पार्ट ऑफ द ग्रेनिच फैमिली, द ग्रेनिच फ्रेटर्निटी। इफ यू स्पीक टू एनी ग्रेनिच alumni, any Greenwich faculty member, anyone, I'm sure they will tell you that it's rather than being part of an institute, it's being part of a family. और फैमिली हमेशा हमें सीजन सिखाती है। तो आई गेस दैट्स व्हाई द एज इज टू कम टू ग्रेनिच। That's so nice. Then Sir Khurram, sir, what is the Greenwich University faculty like, and how and why Greenwich University for the upcoming students? इन ग्रेनिच में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात नवेद साहब ने भी कहा कि ग्रेनिच में आने के बाद एक ग्रेनिच एक फैमिली मेम्बर बन जाते हैं। इन हेयर
इन फैकल्टी एज ए स्टूडेंट यहाँ पर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है बाई फ्लेक्सिबल वे में, बहुत बेहतर इसमें। सेकेंड, हेयर इज़ द इन्वायरमेंट यहाँ पर बहुत बेहतर है। ये ईच फैसिलिटी अवेलेबल है फॉर टीचिंग एंड एज वेल एज स्टूडेंट को हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, एक्सेस है किसी डिजिटल लाइब्रेरी के हवाले से लाइब्रेरी अवेलेबल है पढ़ने के लिए। इसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़ के हवाले से हम बात करें तो यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, जिम है, हर चीज़ें हैं। और हर सेमेस्टर में यहाँ पर डिज़ाइन किया जा रहा होता है को करिकुलर एक्टिविटी डिफरेंट उसके ऊपर, और उसकी भी उस सेमेस्टर में मार्क्स होते हैं। तो देयरफॉर ग्रीनिच इज इन सब चीज़ों के बाद ग्रीनिच इज द बेस्ट। Miss Afshin and Miss Sarah, how was the environment? How was your learning with Greenwich University? I'll start off with Miss Afshin. Acha, so when you talk about the environment, so first if we talk about the physical environment, physically, if you say it, it's quite like airy, open. वो एक होता है ना छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज होती है, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ पर्पस बिल्ट कैंपस that I really appreciated and I enjoyed my time. और इनफैक्ट मैं तो अक्सर वहाँ की सिर्फ कैंटीन में बैठ के सिर्फ एक रिलैक्सेशन के लिए आती थी। हम लोग तो नॉर्मली वी यूज्ड टू कम ओवर द वीकेंड्स, और ड्यूरिंग द वीक वी वर सो बिजी। एंड तो वो एक होता है ना वीकेंड पे आपको थोड़ा सा वेंट आउट करना होता है, अपने आप को एक रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट देना होता है। तो इनफैक्ट आई फाउंड ग्रेनिच बेस्ट फॉर दैट। और फैकल्टी वाइज जैसे इंटेलेक्चुअली एनवायरनमेंट अगर आप कहें तो द फैकल्टी इज प्रोफेशनली क्वालिफाइड, वेरी हेल्पफुल। और एक होता है आपको एक सोशल एंड इमोशनल सपोर्ट सिस्टम जो आपको चाहिए होता है। सो इट्स ऑल देयर एट द ग्रेनिच यूनिवर्सिटी। Okay. Miss Sarah, how would you take it? How was your experience and how was the environment overall for Greenwich University, especially for students? You see, if we talk about especially for students, what do they want? Actually, they want the care. They want that independent attention also. Like, let's talk about a very young child. So in university, even if you're working anywhere, even if you are heading an institution, but once you learn, you become a student, and then you want the teacher to take care of you, of your needs as a student only. So that's what I found in university, that the faculty is so caring. They are very considerate. They are very, there's an emotional attachment also, which develops a great bond between the teacher and the student. No matter how professionally groomed you are, but if eventually if you are learning there, if you are there as a student, they know how to take care of an individual need of the student. So that's the best part of studying at Greenwich University. As far as ambience, as far as the overall atmosphere, I felt a freedom. I felt that they are very liberal, very open, and very, I have seen students like activities, mela, and like matches and all, which definitely gave the students an opportunity to participate and an opportunity to just hang out and look into the environment where they are enjoying the golgappas and the dol dhamaka. So it's really very encouraging at the weekend, once you go away out of all of your worries, and then you have some time to go and just hang out somewhere, and then have some unofficial and have some unplanned activities there. That's the main That's part. so true. That's so true. I've always seen as well. I'm also a student, and the interactions, the socialization, the communication that we encounter, the fun with the teachers as well. Sometimes mela ho raha hota hai, class ho rahi hoti hai, sir mujhe bol rahe hain, nahi Sundar, you're not gonna hum to this song. You're going to sit straight. You're not gonna do that. So, these small things, they actually build up your university life and they help you. And I totally agree to the point that yes, Greenwich University is a very good platform for students because it develops, it caters you, it helps you in this development of your professional careers as well. I'm so happy that we're keeping the professionalism alive, because for any organization, अगर वो professionalism को लेके नहीं चलेंगे, अगर वो professionalism के साथ काम नहीं करेंगे, तो it's no use. हर कोई आजकल हम देखते हैं हर जगह दूसरी जगह कोई ना कोई education को लेकर उसके साथ I don't know what they're doing, to be very honest, but
actually taking it forward and building up an umpire for it. That's a very big thing, and I would totally, hats off to my vice chancellor Miss Seema as well, because she's been so good and she's running this so well. Thank you so much for your time, you guys. I really appreciate it. The B.Ed program is now, ongoing. The admissions are open, and you can all have your queries answered on our Greenwich email, on our WhatsApp query, on our, website. कोई भी किसी को मसला हो, Sir Naveed is definitely very, very helpful. Sir Khurram himself is very helpful. They're just a call away. They're just an email away. वो लोग जरूर हम accommodate करते हैं हम लोगों को. Thank you so much for your time, Sir Naveed, Sir Khurram, Miss Safshin, Miss My Sara. pleasure. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you, Thank thank you. Take Okay. care. Allah Okay, so Hafiz. this was Allah Hafiz, everybody, and this was our B.Ed program special, webinar. We talked about how the webinar is going to go with Greenwich University, what are the programs getting offered to you, the eligibility criteria. Abhibi, if you guys feel like if you've missed out anything and you want more clearance on it, you can see that downstairs over here. We have our official WhatsApp number, we have our email, and we have our website as well over here. कोई भी मसला कुछ भी हो, we're just a call or an email away. Thank you so much for tuning in, you guys. I really appreciate it. Pakistan Zindabad. Allah Hafiz.